Namaskar viewers, hello and welcome to Sunset TV. I am Tina Jha, you're watching Perspective. The Lok Sabha on Tuesday passed the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023. Piloting the bill, Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah said, with the passing of this bill by the House, a new era will begin in the country's cooperative movement. A quick summary of the key features of the bill that amends the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002. So it establishes the Cooperative Election Authority with a view to introduce electoral reforms in the cooperative sector. A multi-state cooperative society will now require prior permission of the government authorities before the redemption of their shareholding. The bill will allow any cooperative society to merge into an already existing MSCS. Under the old rules, only an existing MSCS could merge with another one. Also, it proposes creation of a Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund, which will provide financial support and assistance to struggling or distressed cooperative societies to help them recover and develop. Besides, it proposes appointment of one or more cooperative ombudsman and cooperative information officer to improve transparency, accountability, and grievance redressal within MSCS, making them more responsive to their members' needs. Now, as per the data published by the National Cooperative Union of India, there are about 8.6 lakh cooperatives in the country. How will they be strengthened? Through the various amendments that Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023 seeks to bring about. Also, how will the move help the cooperative sector in strongly contributing to the development of the country? We'll analyze all this and much more in Perspective today with distinguished guests joining us on the program. I'm pleased to welcome in the studio Mr. Vijay Kumar, Special Secretary and Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation. Next to him is Mr. Yogendra Kumar, Marketing Director, IFCO. And joining us virtually are three guests, Mr. Jyotindra Mansukh Lal Mehta, President, National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Limited, New Delhi. He's joining us from Rajkot. Dr. Hema Yadav, Director, Vaikunt Mehta, National Institute of Cooperative Management. She joins us from Pune. And Mr. D. Krishna, Advisor, National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies. He's joining us from Bengaluru. Thank you to all my guests for joining me on this edition of Perspective. Mr. Kumar, allow me to begin the program today with you. So, first of all, to help us and our viewers understand what really a multi-state cooperative society is, and secondly, very briefly, if you could take us through some of the key provisions, the changes that this bill aims to bring about. So first, let me begin, as you said, by explaining what a multi-state cooperative society is. So in the country, there are two types of cooperative societies, which have membership drawn from more than one state. They are the multi-state cooperative societies. They are also called societies with objectives confined to more than one state. So there are about 1,500 such societies. Right now, they are governed by Multi-State Cooperative Societies Act 2002. तो अभी जो नया एक्ट हमारा लोकसभा में पास हुआ है, इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इन मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ की रेगुलेशन को इम्प्रूव करेंगे, इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करेंगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे. द बिल हैज़ रफली अबाउट 48 clauses which can be summarized into main 6 categories. So I will touch upon some of them very briefly. For example, clauses related to election. One of the key features is to establish a cooperative election authority, which will have same powers on the same lines as Election Commission of India for cooperative elections. तो इसका क्या लाभ होगा? इसके होने से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्शन टाइम पर होंगे, उनमें डिले नहीं होगी और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं होगा. तो इट विल इंश्योर फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस. सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज अबाउट कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स. पहली बार ये इसमें हमने कहा है कि हर सोसाइटी के बोर्ड के अंदर कम से कम 2 वुमेन मेंबर और एक SC या ST मेंबर होगा. सो दिस विल इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एंड SC एंड ST ऑन द बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तीसरा एक ब्रॉड कैटेगरी है हमारा स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस. इन सोसाइटीज़ की गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, इनके प्रशासन को मजबूत करना. उसके लिए बिल के अंदर एक प्रावधान है कि हमारी जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनके लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार प्रूडेंशियल नॉर्म्स जारी कर सकेगा. उसका लाभ ये होगा कि ये सोसाइटी अपना फ़ंड कहाँ इन्वेस्ट करती हैं, ये सोसाइटी अपना फ़ंड कितनी मात्रा में इन्वेस्ट करती हैं, फ़ंड की सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है. इससे सोसाइटीज़ में होने वाले गबन वगैरह गबन जो होते हैं बड़े बड़े वो दोबारा से नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा इनका ऑडिट मैकेनिज्म स्ट्रेंथन किया जाएगा. सोसाइटीज़ में अभी कोई नियम नहीं है कि अपने ऑडिटर कहाँ से लेकर आएंगे, पर हमारे इस एक्ट के आने के बाद में हमारे सेंट्रल स्टार के पैनल से ही ये सोसाइटीज़ अपने ऑडिटर चुन पाएंगी.
इसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका जो पहलू है वो है सहकारी ओम्बड्समैन। अभी तक इन सोसाइटीज़ के मेंबर्स के पास ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कोई साधन नहीं, कोई मार्ग नहीं है। तो जिस प्रकार से आरबीआई का ओम्बड्समैन होता है, इनकम टैक्स का ओम्बड्समैन होता है, एक सहकारी ओम्बड्समैन भी होगा, एक से अधिक भी होंगे जो इन सहकारी संस्थाओं के मेंबर्स की शिकायतों को, इनके ग्रीवेंसेस को दूर करेंगे। इसके अलावा इन सोसाइटीज़ की फंडिंग बढ़ाने के लिए इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि दी सोसाइटीज़ कैन ऑल्सो इशू व्हाट वी कॉल नॉन वोटिंग शेयर्स। तो इससे इनकी कैपिटल बढ़ सकेगी। और जैसा आपने मेंशन किया, वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग ए रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड। इससे जो सोसाइटी सिक हो जाती हैं या जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है, वो सोसाइटीज़ इस फंड को टैप कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इनकी मॉनिटरिंग को बढ़ाने के लिए, इन सोसाइटीज़ में और स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए, इनमें कोई अगर कदाचार करता है, कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है या कोई गबन करता है, कोई फ्रॉड करता है, उसके लिए फाइन्स लगाए जाएंगे। उन फाइन्स की जो है लिमिट बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, टू इम्प्रूव देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, we have brought in a provision which says that all interaction with the society can be done electronically. Right. इसके लिए हम लोग अपना एक पोर्टल भी बना रहे हैं। तो सोसाइटीज़ की एप्लीकेशन, इनका रजिस्ट्रेशन, इनके बायलॉज के अमेंडमेंट सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली किया जा सकेगा। So we'll discuss how effective they will be in the times to come, but what are the kind of coordination which will be required in just a moment. But coming across to you, Mr. Kumar, you know, in India, we've seen how cooperative movement has given several important enterprises. Amul and IFFCO have been apex bodies that employ lakhs of people. Any change in this sector is going to have a significant impact on these bodies. So, you know, as a representative of IFFCO here on the panel today, how do you look at these amendments which the bill brings about? And as you know, Mr. Vijay Kumar rightly explained, there are multiple provisions that aim at bringing about transparency and accountability. Which is the most important one which you see in the times to come will bring about the most impactful change as far as the cooperative sector in India is concerned? So, as per my opinion, we see this bill is most beneficial bill in favor of strengthening the cooperative. Ours is also a multi-state cooperative society, and it is established in 1967. And because of this cooperation and with the leadership, we are developing continuously, and this will add so many other extra things which are not present in the previous bills. So this bill will be very facilitating to all cooperatives, including my cooperative. This is full transparency, no बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए जो बिल आया है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा और इससे सहकारिता का एक चतुर्दिक विकास संभव हो सकेगा। द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स कैन हैपन। यहाँ पे जहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सरल की गई हैं, यदि समिति सिक हो जाए, यानी मान लो काम करने लायक न रहे, तो उसको भी पुनः चलाने की व्यवस्था है। अम्बड्समैन की जो परिकल्पना है, किसी शिकायत को पूर्णतः निस्तारित किया जा सकता है। ढेर सारे इसमें सरलीकरण किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में हमारी संस्था और सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रगति का एक नया रास्ता मिलने वाला है। ये मेरा इसमें मानना है। Okay, let me bring in the representatives from NAFCB here, Mr. Krishna and Mr. Mehta. I'll come to you one by one. Mr. Mehta, to you first. You know, the government's aim is to achieve overall prosperity of the cooperative sector through the mantra Sehkar se Samriddhi. When we look at this sector contributing to the country's development, especially in the next 25 years, what is the role that you see this bill, the reforms that it proposes, bring about? Madam, this is really, I mean, the next Amrut Kal, 25 years, Azadi ka Amrut Kal, and cooperative had never been given any attention to this thing. And this is the first time the act has been amended and acted just to have result of samruddhi of a common person. If you remember, Mr. Amit Shah had spoken in one speech that we can achieve $3 trillion easily. It might be we'll reach up to 5 trillion, 10 trillion also. But we don't want the common person or middle class person or garibi zyada ho jaye or disparity bade. So they don't want disparity to be there in the nation. And each and every single person, अगर वो छोटा आदमी है या मध्यम वर्ग का है, they should contribute to the economy. और इकोनॉमी का जो बेनिफिट है सबको मिलना चाहिए।
तो ये जो नेक्स्ट 25 ईयर्स है वो आप अगर कॉरपोरेट समझिए, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसका आप हर रोज जिक्र करते हैं, उसकी चैनल चलती है, CNBC चलता है, और कोऑपरेटिव को कोई सुनता ही नहीं था। अब कोऑपरेटिव जो है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसलिए इसमें जो एक मिस्टर विजय कुमार हैज ऑलरेडी ड्रॉन अटेंशन कि एक कैपिटल बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा काम किया है। नॉन वोटिंग शेयर आपको आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। मीन्स कैपिटल, आप ऑगमेंटेशन ऑफ कैपिटल वाला जो इश्यू है वो बहुत बड़ा है। तो ऑगमेंटेशन ऑफ कैपिटल से आप बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पे काम कर सकेंगे। आज तक जो कोऑपरेटिव है वो या तो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट कोऑपरेटिव है, या मल्टी स्टेट है। अब आप मल्टी नेशनल कोऑपरेटिव के भी कल्पना कर सकते हैं। ये मल्टी नेशनल होने वाले जो अभी अमूल और इफ्को, क्रिप्को, कैम्पको, they are exporting in huge quantity. So this will be multi